बेटे आज लेते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. So today's topic is tubercular meningitis. Tubercular meningitis is an infection. Tubercular meningitis, short form TBM, is an infection caused by Mycobacterium tuberculare. Is caused by Mycobacterium tuberculare. It may occur as a part of widespread tuberculosis in children. It may occur as a part of widespread tuberculosis in children, but it usually occurs by reactivation of a subpile focus of subpile PIAL, subpile focus FOCS, focus of
A dormant lesion, dormant, DORMANT, dormant lesion, इसको क्या बोलते हैं? रिच फोकस, RICHS, रिच फोकस, FOCUS. Then pathology of tubercular meningitis. इसमें पॉइंट वाइज आपको दिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट, सब एरिथेनॉइड स्पेस throughout CNS is involved. Subarachnoid space throughout CNS is involved. Basal cistern, CISTERN, basal cistern and Sylvian fissure and Sylvian, SYLVIAN, and Sylvian fissure, FISSSURE, and Sylvian fissure are maximally involved. The first one क्या हो गया? Subarachnoid space throughout CNS is involved. Basal cisterns and Sylvian fissures are maximally involved. This is the first one. Second, thick exudate, EXUDATE, thick exudate cover the base of the brain. Thick exudate cover the base of the brain and scattered tubercle TUBERCLES, and scattered tubercles, TUBERCLES, and scattered tubercles are found in the meninges. Third point, emerging cranial nerves are engulfed by these gelatin-like exudate, EXUDATES. Next one, exudates may also block foramina of Leschka, foramina, FORAMAINA, foramina of Leschka, LUS, foramina of Leschka, LUSCHKA, foramina of Leschka and meningitis.
Magentine, Magendie, Magentine. So exudates may also block foramina of Leschka and Megan type. Or any point of CSF pathway or any point of CSF pathway resulting in hydrocephalus personalism. Exudate may also block foramina of Leschka and Merendine or any point of CSF pathway resulting in hydrocephalus. Next point. Blood vessels at base show blood vessels at base show inflammatory changes and may cause cerebral infarcts, INFARCTS. So blood vessels at base show inflammatory changes and may cause cerebral infarcts. Next is clinical feature of tubercular meningitis. तो क्वेश्चन भी एक दो बार आ चुका है. Clinical features. It has a subacute or chronic cause. It has a subacute or chronic course. Disease may occur at any age. But children are commonly affected. It has subacute or chronic course. Disease may occur at any age, but children are commonly affected. Next. In children's, early manifestation are lack of interest, anorexia, urinary retention, and constipation. So in children's, early manifestation are lack of interest, anorexia मैंने आप लोगों को पता भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट. यूरिनरी रिटेंशन मैंने यूरिन रुक जाता है. यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन. नेक्स्ट पॉइंट. Classical meningitis symptoms seen are क्या होंगे classical symptoms? Fever, headache, and vomiting appearing over a few days. Next one. Further on,
Further on, cranial nerve pulses. Further on, cranial nerve pulses cranial nerve pulses, formerly blindness, डिप्लोपिया। दो चीज दिखाई देती हैं। एक चीज का कितना विजन, मतलब कोई भी सामने है तो कितने दिखाई देंगे? दो। दो विजन जब दिखाई देते हैं, दो चीजें दिखाई देती हैं, तो इससे क्या बोलते हैं? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया ड्यू टू ऑप्थेल्मोप्लीजिया। डिप्लोपिया इज ड्यू टू ऑप्थेल्मोप्लीजिया। ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ओ पी एच टी ओ पी टी एच ए एल एम ओ प्लीजिया, पी एल ई जी आई, ऑप्थेल्मोप्लीजिया। सो डिप्लोपिया क्यों होता है? ड्यू टू ऑप्थेल्मोप्लीजिया। फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी जानते होंगे। ये सेमिक नर्व ऐसे आती हैं, क्रेनियल नर्व होती हैं, ये ईयर के नीचे से इस तरीके से यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आके 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। तो दो टर्म होते हैं, एक होता है पाल्सिंग। पाल्सिंग मीन्स वीकनेस, पैरालिसिस मीन्स जानते हैं आप, कंप्लीट मसल टोन खत्म हो जाते हैं। So facial pulsing and deafness occur with hemiparesis, आधी बॉडी में वीकनेस आ जाना। With hemiparesis और paraplegia। With hemiparesis और paraplegia follow। With hemiparesis और paraplegia follow। These deficit may occur. These deficit DEFICITS. So these deficit may occur suddenly. These deficit may occur suddenly due to vascular involvement. So these deficit may occur suddenly due to vascular involvement. Next, clinical feature. Features of increased ICP. ICP क्या होता है? Intracranial pressure. So features of increased intracranial pressure due to hydrocephalus will result in change in intellectual, urinary incontinence, and gait ataxia. So features of increased ICP in intracranial pressure due to hydrocephalus will result in change in intellectual, urinary incontinence, and gait ataxia. Next. The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion is a common complication. The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion is a common complication. Next point.
अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए, left untreated patient lapses, LAPSES. Left untreated patient lapses into vegetative state. Patient lapses into vegetative state and dies. So left untreated patient lapses into vegetative state and dies. Next point. Tubercular spinal meningitis. Tubercular spinal meningitis may manifest as an acute, subacute, acute, subacute, or chronic form. So tubercular spinal meningitis may manifest as an acute, subacute, or chronic form. The dorsal cord seems to be affected most commonly. The dorsal cord seems to be affected most commonly, followed by the lumbar and the cervical region. Followed by the lumbar and cervical region. The clinical picture in primary spinal meningitis. The clinical picture in primary spinal meningitis is often characterized by myelopathy, MYELOPATHY, is characterized by myelopathy with progressive ascending paralysis, eventually resulting in basal meningitis, and associated sequelae, sequelae. Next point. In some cases with acute onset, patient develops acute paraplegia. In some cases with acute onset, patient develops an acute paraplegia with sensory deficit and urinary retention. In some cases with acute onset, patient develops acute paraplegia
with sensory deficit and urinary retention. Next point, the subacute form, the subacute form is often dominated by the subacute form is often dominated by myeloradiculopathy. The subacute form, the subacute form is often dominated by is often dominated by myelo radiculo radiculopathy PATH1 myeloradiculopathy with radicular pain radicular with radicular pain and progressive paraplegia or tetraplegia. Next point, a less virulent chronic form, a less virulent, virulent, a less virulent, virulent, a less virulent chronic form, a less virulent chronic form might mimic मैंने एक जैसा लगना MIC might mimic a very slowly progressive spinal cord compression or a non-specific arachnoiditis, arachnoiditis. अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं टीबीएम में, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है इसका टीबीएम क्या हो सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल रिगार्डिंग टीबीएम, तो क्या हो गया ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इन्वेस्टिगेशन, पहली इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। अब इसमें क्या दिखाई देता है, तीन चीजें दिखाई देती हैं, मेनिंजियल इनहेंसमेंट, दूसरा हाइड्रोसिफेलस एंड थर्ड इज सेरिब्रल इंफार्क्ट, पहला क्या मेनिंजियल इनहेंसमेंट, सेकंड हाइड्रोसिफेलस and third is cerebral infarct, INFARCTS। अब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्थिति क्या होती है, नंबर पंचर करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स, क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। सो राइट डाउन CSF फाइंडिंग in tubercular meningitis. Pressure is increased. Next, if fluid कैसा होता है, clear, usually clear, but xanthochromia
xanthochromia. But xanthochromia suggest block in the CSF flow, suggest block in the CSF flow in the spine canal. Next, a fine clot, CLOT clot, a fine clot or cobweb, COBWEB, a cobweb may form on allowing to stand for some time. A fine clot or cobweb may form on allowing to stand for some time. Next, protein levels are elevated. इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है. प्रोटीन लेवल्स आर एलिवेटेड. कितना हो जाता है? 100 to 800 मिलीग्राम पर डीएल. प्रोटीन लेवल्स आर एलिवेटेड. कितना हो गया? 100 to 800 milligram per dl. Very high level indicate block to CSF flow. Very high level indicate block to CSF flow. Next, शुगर की मात्रा इसमें कम होती है. शुगर इज लो, less than 40% of blood sugar. So less than 40% of blood sugar. Next, cell counts are elevated. यानी increased. Mainly lymphocytes. Cell counts are increased. Mainly lymphocyte. Ziehl-Neelsen staining. Zeal की स्पेलिंग जानते होंगे, फिर सुन लीजिए. ZIEHL. Zeal-Neelsen. NEELSEN. Neil-Nelson staining or fluorescent staining. Fluorescent, FLUORESCENT, or fluorescent staining of the coagulum, COAGULUM, of the coagulum may show acid-fast bacilli. अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का दूसरा नाम क्या है? एसिड फास्ट बैसिला. Cultures are rarely positive and take 6 weeks. Cultures are rarely positive and take 6 weeks. Next, ADA are elevated. अब ADA का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज लेवल. एडिनोसिन ADENOSIN, adenosine deaminase, DEAMINASE. Adenosine deaminase level are elevated. Next, nucleic acid amplification test. Nucleic acid amplification, FICATION. Nucleic acid amplification test on CSF
PCR test on CSF-PCR test to detect microtubercle to detect mycobacterial nucleic acid to detect mycobacterial nucleic acid। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके अलावा और क्या करते हैं? अदर इन्वेस्टिगेशन आर चेस्ट रेडियोग्राफी। चेस्ट रेडियोग्राफी it may show evidence of pulmonary tuberculosis, old or active, in 50% cases. Chest radiography, it may show evidence of pulmonary tuberculosis, old or active, in 50% cases. Next, Mantoux test, MANTOUX, Mantoux test. It is rarely useful. Then is treatment. Anti-tubercular treatment should be started at the earliest. Anti-tubercular treatment should be started earliest early phase, that is 2 months, first 2 months, early phase that is first 2 months involve intensive therapy combining, क्या क्या देंगे? combining rifampicin 450 मिलीग्राम, rifampicin RIF-AMP-ICIN, कितनी इसकी डोज है? 450 मिलीग्राम पर डे, 450 मिलीग्राम पर डे। सेकेंड मेडिसिन INH आइसोनाइजिड, कितना देते हैं? 300 मिलीग्राम पर डे, 300 मिलीग्राम पर डे। तीसरा मेडिसिन देते हैं पायरेजिनामाइड, पायरेन PYRAZINAMIDE, पायरेजिनामाइड कितना देते हैं? 1500 मिलीग्राम दिन में एक बार। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन इंट्रामस्कुलर 0.75 ग्राम इंट्रामस्कुलर ओडी, ये 3 महीने के लिए देते हैं इंजेक्शन। 90 इंजेक्शन का कोर्स होता है। After a period of 2 months, rifampicin and INH is continued. After 2 months, rifampicin and INH is continued for another 7 to 10 months. All patients should receive prednisolone. All patients should receive prednisolone 40 milligram, 40 milligram a day to reduce meningeal adhesion. Adhesion मैंने meninges आपस में चिपक जाती हैं। Adhesion, ADHESIONS, and severity of arthritis. It is given for 6 weeks. अब हाइड्रोसेफेलस के लिए क्या करते हैं? Hydrocephalus will require ventricular drainage
ventricular drainage or shunt. So this is all about the tubercular meningitis. एक मिनट बैठे दिन हेलो सर। So after TBM, the next topic is T10. T10. अब टिटेनी सब जानते हो ब्लड के अंदर आयोनाइज्ड कैल्शियम जब कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टी टेनी, TETANY, टी टेनी, TETANY. So next topic is T10. This is a clinical condition. This is a clinical condition characterized by. This is a clinical condition characterized by low level of ionized calcium, low level of ionized calcium leading to increase neuromuscular excitability, leading to increased neuromuscular excitability. In this condition, total levels of calcium total level of calcium may even remains normal. ब्लड का टोटल कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कौन सा कैल्शियम घट गया? आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द ब्लड. Causes of tetany. और इसके कॉजेज क्या है टिटेनी के? पहला कॉज क्या? हाइपोकैल्सीमिया. ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा घट गई, हाइपोकैल्सीमिया. अब हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम क्यों घट गया? इसके भी कई सारे रीजन हैं. So the first cause of hypocalcemia is malabsorption.
malabsorption. Second, osteomalacia. Osteomalacia. Third, hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism. Next cause, chronic renal failure. Fifth, acute pancreatitis. And sixth, anticonvulsant drugs like डालेंटिन सोडियम। तो 6 कारण हैं जिससे ब्लड का कैल्शियम घट सकता है। ये 6 कारण क्या? माल एब्जॉर्प्शन, सेकेंड ऑस्टियोमलेशिया, थर्ड hypoparathyroidism, fourth chronic renal failure, fifth acute pancreatitis, sixth anticonvulsant drugs like डायलेंटिन सोडियम। मार्केट में किस नाम से आते हैं? फेनेटोइन सोडियम। सेकेंड कॉज ऑफ टिटेनी इज हाइपोमैग्नीसीमिया। ब्लड के अंदर एमजी मैग्नीशियम का लेवल घट गया। हाइपो HYO हाइपो मैग्नी MAGNE सीमिया SAEMIA hypomagnesemia. And the third cause of tetany is alkalosis and hypokalemia. Alkalosis 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 and hypokalemia HYPO hypokalemia KALAAEMIA। अब एल्कलोसिस और हाइपोकैलेमिया के क्या क्या रीजंस हैं? 5 कारण हैं। पहला क्या है? रिपीटेड वॉमिटिंग। सेकेंड, excessive intake of alkalis। पहला क्या है? रिपीटेड वॉमिटिंग। सेकेंड, excessive intake of alkalis। थर्ड, hysterical hyperventilation leading to alkalosis। Hysterical hyperventilation leading to alkalosis। And fourth is primary hyperaldosteronism। And fifth is acute anion load LOD load लैक्टेट। किस किस में हो सकता है? एक्यूट एनाइन लोड। पहला लिखिए, साइट्रेट इन मैसिव ट्रांसफ्यूजन, lactate and bicarbonate, etc. So what are the causes of alkalosis and hypokalemia? 5 रीजंस मैंने आपको बताया। कौन कौन से? रिपीटेड वॉमिटिंग, excessive intake of alkalis, hysterical hyperventilation leading to alkalosis, primary hyperaldosteronism, and last is acute anion load। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? साइट्रेट इन मैसिव ट्रांसफ्यूजन, लैक्टेट, bicarbonate, etc. So these are the causes of tetany. Clinical features. Tetany may be latent or manifest. Tetany may be latent
or manifest in manifest tetany symptoms and signs in manifest tetany symptom and signs depends upon the age of the patient. In children, a characteristic triad of symptoms. In children, a characteristic triad, TRIAD, triad means team. In children, a characteristic triad of symptoms. क्या क्या तीन symptoms है ये? Carpopedal spasm, carpo, C-A-R-P-O, carpopedal, P-E-D-L, carpopedal spasm, stridor, S-T-R-I-D-O-R, stridor, S-T-R-I-D-O-R, stridor, and convulsions, C-O-N-V-U-L-S-I-O-N-S. Convulsions may be present in adults paresthesias in the peripheral part. In adults, paresthesia. Hello? जरा क्लास में नहीं होगा? हाँ, नहीं बात. So in children, a characteristic triad of symptoms: carpopedal spasm, stridor, S-T-R-I-D or stridor, and convulsions may be present. In adults, paresthesias in the peripheral part or around the mouth is a common complaint. Carpopedal spasms are less common. While convulsions and stridor are rare. The hands in carpopedal spasm adopt a peculiar posture. The hands in carpopedal spasm adopt a peculiar posture in which there is flexion at metacarpophalangeal joint. And extension at interphalangeal joint. फ्लेक्शन कहां पर होगा? मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट में, और एक्सटेंशन किसमें होगा? इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स. and there is opposition of thumb, opposition, OPPOSITION, opposition of thumb
Pedal spasm, in children's में pedal spasm, PEDL, pedal spasm are less frequent. Stridor, is STRIDOR, stridor मैंने loud sound. Loud sound is caused by closure of the glottis. Symptoms of chronic disease are in adult. Symptoms of chronic disease in adult are lethargy, और क्या होता है? Personality changes, anxiety, premature cataract, Parkinsonism, and mental retardation. So symptoms of chronic disease in adult are lethargy, 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 personality changes, anxiety states, premature cataract, Parkinsonism, and mental retardation. अब एक टिटेनी होता है लेटेंट टिटेनी. ये लेटेंट टिटेनी क्या चीज होती है? The absence of symptoms and signs of tetany. The absence of symptoms and signs. The absence of symptoms and signs of tetany in a patient with hypocalcemia. In a patient with hypocalcemia is called latent tetany. Is called latent tetany. The signs of tetany. The signs of tetany can be induced by. The signs of tetany can be induced by provocative test. The signs of tetany can be induced by provocative test. और इसमें दो टेस्ट हैं, ट्राउजर साइन और दूसरा है शो स्टिक साइंस. पहला कौन सा है? ट्राउजर साइन. TROUSEUS. ट्राउजर साइन. इसको बेटा मैं यहीं रखता हूँ. लगभग टिटेनी भी खत्म ही है, थोड़ा सा है, इसको ले लेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू सर. काफी थैंक यू सर. वेलकम बेटे. काफी को मैंने मेडिसिन में ठीक किया है और देखूंगा और कुछ मिलेगा तो कल फिर मैं आपको 2 बजे आप आ जाइए. कोई लेक्चर तो नहीं कल 2 बजे? सर नहीं सर, कोई लेक्चर नहीं है. ठीक है बेटे, कल 2 से 3 फिर मिलते हैं. ओके बेटे, बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो. ओके सर.